Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 3. This is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers, and today we are going to do chapter 5 of your book, and the name of the chapter is Formatting Text in MS Word 2019. So we are going to format the text. जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको कैसे फॉर्मेट करना है, उसके स्टाइल या फिर साइज को कैसे चेंज करना है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. चिल्ड्रन, फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम चाहते हैं कि जिसको भी हम वो टेक्स्ट दिखा रहे हैं वो आसानी से देख सके, तो हमारा जो टेक्स्ट जो भी हमने बनाया डॉक्यूमेंट वो फॉर्मेटेड होना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2019. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न चिल्ड्रन अबाउट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, bullets and numbering, paragraph formatting and applying borders. So these four main important things we are going to learn. The process of changing the appearance and arrangement of the text to make it look attractive is known as formatting. So formatting क्या है? वो प्रोसेस है जो किसी भी टेक्स्ट के अपीयरेंस या फिर उसके अरेंजमेंट को चेंज कर देता है ताकि वो टेक्स्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर अच्छा दिखे. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. नाउ फर्स्ट कम्स कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है? The process of displaying the selected text in a certain manner is called character formatting. So, किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का एक तरीका कह सकते हो आप, the process कह सकते हो, उसे ही हम character formatting कहते हैं. Now, it consists of text properties like bold, italic, underline, font style, font color, font size, etc. So ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, these all are included in character formatting. In class 2, you have already learned about how to change the font style. Font style कैसे change करते हैं आपने क्लास में already पढ़ रखा है. How to change the color and the size also. Now let us look at some more formatting options available in the font group. So font group में और भी कुछ options है. Let's read about them. Increase or decrease font size. Font के size को increase और decrease कैसे करते हैं? We are going to learn about that. So the increase font size and decrease font size options are used to make your text a bit bigger and smaller respectively. तो हमारे जो text है उसको बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं with this increase and decrease font size. To increase or decrease font size, follow the given steps. So steps दिए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है so that we can increase or decrease the font size. First is select the text. जो भी text है उसे पहले select करना है. Then click on increase for making the text bigger and click on decrease for making the text smaller. In the font group on the home tab. तो home tab में हमें font group में जाके इन दोनों ऑप्शन में से एक को चूज करना है. Now changing the case. Case means there are some cases given here. Let's read about them. When you need to quickly change text case, you can use the change case command. So text case को change करने के लिए हम बहुत सारे command है उसे हम use कर सकते हैं. And one is change case command. Instead of deleting and retyping. तो suppose हमने कुछ लिख लिया है, अब उसको delete करने की जगह दोबारा से लिखने की जगह we can change the case. यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसके केस को. Word 2019 allows you to change the case of the type text to any of the following options. So इन 5 में से कोई भी एक ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं for changing the case of our text. Sentence case. First is our sentence case. क्या होता है sentence case? Only the first letter of the sentence is displayed in uppercase. Uppercase का मतलब है बेटा capital A. The rest of the letters are displayed in lowercase. So if I want to write apple, तो बाकी words सब जो है small में रहेंगे
और सेंटेंस केस को यूज करने के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लोअर केस, ऑल द लेटर्स आर डिस्प्लेड इन स्मॉलर लेटर, लोअर केस। अब मैंने एप्पल लिखना है तो सारे जो भी वर्ड्स हैं सारे जो है स्मॉल में हो जाएंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लोअर केस। अपर केस में सारे जो है कैपिटल में हो जाएंगे एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज डिस्प्लेड इन अपर केस, द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर डिस्प्लेड इन लोअर केस। सो अब ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला वर्ड कैपिटल, पहला वर्ड कैपिटल और पहला वर्ड कैपिटल, बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं सारे स्मॉल में लिखे गए। सो हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉगल केस, ऐसा दिखेगा टॉगल केस जैसा आपके सामने है, पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल में हो जाएंगे। इट चेंजेस द केस ऑफ एवरी लेटर, अगर कैपिटल में तो स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल में तो कैपिटल में हो जाएगा। द अपर केस लेटर्स आर चेंज्ड टू लोअर केस एंड द लोअर केस लेटर्स आर चेंज्ड टू अपर केस। सो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, सेंटेंस केस में पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, लोअर केस में सारे स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, और टॉगल केस में अगर कैपिटल है तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और स्मॉल है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ केसेस। नाउ हाउ कैन वी चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट? टेक्स्ट के केस को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उससे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया है, क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन। सो यहाँ पे जाके हमने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है, वहां से चेंज केस ऑप्शन पे जाना है एंड सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन। इन 5 में से जो भी हमें चाहिए वी कैन सेलेक्ट दैट, और जैसे हमने इस पे क्लिक किया व्हाट विल हैपन, द केस विल बी चेंज्ड, केस चेंज हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड मींस ये हमारे सामने लिखा हुआ है, जो भी हम टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक्स मींस ऐसा हो जाएगा, एंड अंडरलाइन मींस जो भी हमने सेलेक्ट किया उसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगा। सो दीज आर यूज्ड टू एम्फसाइज द टेक्स्ट टू मेक इट स्टैंड आउट, और टेक्स्ट को और अच्छा दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। These options can be used to help draw attention to important words or phrases. So important words पे हम ये कर सकते हैं या फिर phrases के ऊपर हम ये apply कर सकते हैं. So how can we do that? For doing it, first we have to select the text, then click on the here is our bold, italics and underline option in the home tab in this font group. तो home tab के font group में जाना है, उसमें से पहले एक तो सेलेक्ट करना है, फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके जो भी हमें अप्लाई करना है, बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दिया हमने, इटैलिक्स करना है तो इटैलिक पे क्लिक कर दिया, और अंडरलाइन करना है तो हमने अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, और सेम विल बी अप्लाइड इन अ टेक्स्ट. सो दिस इज द वे टू अप्लाई ऑल दीस 3. The bold B, italics I and underline U buttons have 2 states on and off. इसमें on या फिर off state होते हैं. When the buttons are on the on state, the required style is applied to the text. So जब वो on position पे है अगर ये बटन, so जितने भी text हम लिखेंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएंगे, और जब off state में है so जितने पे भी हमने लिखा हुआ है वो सब जो है वहां से गायब हो जाएगा, मिट जाएगा. In the case of selected text, selected text में ही ऐसा होगा. Now strike through subscript and superscript. So there are 3 more things that we have to learn, and what are they? पहला है strike through, subscript and superscript. Strike through here we have applied strike through. अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे? देख के आपको पता चल रहा है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके बीच में से एक लाइन जाती हुई मिलेगी. This is called strike through. बीच में से लाइन ड्रॉ करनी है. Is a font effect that cross something out by drawing a line through it. तो किसी भी चीज के थ्रू एक लाइन जाती है जिससे हम स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं.
फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट. सो टेक्स्ट को हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे जाना है और ये जो आंसर हमें दिख रहा है दिस विल अप्लाई टू आवर टेक्स्ट. नेक्स्ट कम्स द सुपरस्क्रिप्ट. सो सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा? दिस विल हैपन. 4 के साथ th लिखा था पर आप देख सकते हो th 4 से ऊपर पहुंच गया है. ये सारे एक ही लाइन में लिखे हैं बट 4th का th ऊपर चला गया. दिस इज सुपरस्क्रिप्ट. इट रिफर्स टू द टेक्स्ट दैट इज पोजीशन स्लाइटली हायर देन द लाइन ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट की जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है. दिस सुपरस्क्रिप्ट. टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट फॉलो दीस स्टेप्स. सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट दिस टेक्स्ट. सिलेक्ट कर लिया. फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है. वहां से सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस पे भी हमने किया है the position of the selected text slightly higher than the line of text. Next is subscript. अब subscript में क्या होता है? जो भी टेक्स्ट है, जो ये जो नंबर है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. In this subscript, the text is positioned slightly lower than the line of text. So ये हमारे टेक्स्ट की लाइन है, इससे नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो गया. कैसे करना है? सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को. होम टैब में जाना है. फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है और फिर वहां से हमें सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और the result is in front of. This will happen when we select this subscript. Next is text effects. You can modify the appearance of the text by changing the fill or outline color and adding effects like shadow, glow, reflection effect, etc. So ये जितने भी चीजें यहाँ लिखी हुई है ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो जाएंगे हमारे टेक्स्ट में. शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें कब होंगी? जब हम टेक्स्ट इफेक्ट को यूज करते हैं. टू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट में इफेक्ट्स डालने के लिए what we have to do? We have to click on the home tab, then font group, then we have to select the typography option and from there we have to come to this text effect. So after clicking here, we can see there are different effects given. We can select the effect that we want to apply and then the change is appeared on the text. तो text में वो change आ जाएगा जो भी हमने select किया है. So here we have applied the effect. Next, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग. जो भी फॉर्मेटिंग की है उसे क्लियर करना है. वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें सबको हटाना है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग. यू कैन इजीली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सच एज बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, कलर, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और एंड मेनी मोर थिंग्स बाय यूजिंग दिस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग. The clear all formatting option is used to remove all the formatting from the selected text with leaving only the normal unformatted text. So जो normal text था वो हमारे पास वापस आ जाएगा और जो formatting थी सारी वहाँ से हट जाएगी. Follow these steps. So what are the steps? First we have to select the text, then we have to go to home tab, font group and then click on the clear or formatting option और जिसके बाद the formatting will be erased. Here we can see the result. Next is highlighting text. टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट किया जा सकता है? हाईलाइटिंग मींस मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन. जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना ताकि जो भी उसे पढ़ रहा है वो उसका अटेंशन देखते ही उसके ऊपर चला जाए. वी कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स यूजिंग द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन. सो टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन की मदद से हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं. To highlight the text, we have to first select the text, then click on the text highlight color. Color option is given here, and it is in the home tab on the font group. And after clicking that, the text will be highlighted. If you want to remove highlighting, अब remove करनी highlighting, select the no color option. इसी ग्रुप में आपको no color option दिखेगा. आप उसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे है, आप इसमें क्लिक करेंगे, जो हाईलाइट था वो वहां से हट जाएगा. नेक्स्ट इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. सो जो भी कैरेक्टर है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, जो वर्ड्स लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाके लेट्स लर्न अबाउट दैट.
you can use the more formatting option using the font dialog box. So font dialog box में हम क्लिक करके more formatting option को select कर सकते हैं. To open the font dialog box, click on the font dialog box launcher. So font dialog box को लेकिन हमें font dialog box launcher पे click करना है. In the font group in the home tab. So home tab पे ही हमें मिलेगा in the font group. And here we can see different options are given. Let's read about them. First is here we can see this is a font group. अब इसमें हमने क्या किया है? Select font. We can select the font from here. Select font color. Font का color हम यहाँ से choose कर सकते हैं. Select special effect यहाँ से choose कर सकते हैं जो strike through, double strike through है, superscript, subscript. तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से मिलेंगे. Then select font style. Font का style मिलेगा यहाँ से. Italics में करना है, bold में करना है, जिसमें भी करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं. Font के size को change कर सकते हैं. Means we can increase or decrease it. Select underline. Underline option यहाँ से select कर सकते हैं. Select underline color. Underline कौन से color से करना है वो हम यहाँ से select कर सकते हैं. Here we can see there is a body जिसमें हम जो भी इनमें से features हम इसमें लगाएंगे वो यहाँ पे show होगी. और select करने के बाद we have to click on this OK button. Now paragraph formatting. How can we format a paragraph? The paragraph formatting feature of Windows 2019 can be used to format the appearance of text in the paragraph. So text का जो भी appearance है उसे change करने के लिए हम paragraph formatting use कर सकते हैं. First comes the aligning text. Text को align करना है. So for aligning the text, the manner in which text is placed between the margins of a page is called alignment. So text हमारे पेज पे कैसा दिख रहा है उसे ही alignment कहा जाता है. In Word 2019 allows you to change the alignment of the text in any of the 4 options. So 4 option है. लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है तो आप देख सकते हैं ये सारे एक ही लाइन में है. यहाँ पे आगे पीछे है. सेंटर मीन्स सब कुछ है बीच में अलाइन हो गया है. इधर भी गैप छूटा और इधर भी गैप छूटा. अलाइन राइट में क्या होगा? सब कुछ है राइट की तरफ. यहाँ पे देखिए अलाइन एक सीधी लाइन में है. इधर का एरिया हमने छोड़ दिया है. जस्टिफाई में जो भी लाइन है वो इधर और इधर दोनों तरफ इक्वली बढ़ जाएंगी. पेज में इक्वली जस्टिफाई में वो बढ़ जाती है. कोई भी लाइन इधर उधर नहीं होती है, स्प्रेड आउट नहीं होती. सो दीज आर द 4 पैराग्राफ अलाइनमेंट्स. वी कैन यूज दिस टू अलाइन आवर टेक्स्ट. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट. To align the text, follow these steps. So यहाँ पर text देखिए हमारे सामने है और इसे हमें align करना है. Select the text, select the required alignment option in the paragraph group on the home tab. So home tab के paragraph group में जाना है और वहाँ से जो भी alignment चाहिए इन चारों में से उसे select कर सकते हैं. अब हमारे सामने text है. आप देख सकते हो कि each other ना तो इधर लिखा है ना ही इधर लिखा है, बीच में लिखा है. इसका मतलब हमने कौन सा एलिमेंट चूज किया है? हमने सेंटर अलाइनमेंट चूज किया. दैट्स व्हाई ईच अदर बीच में लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज लाइन स्पेसिंग. लाइंस के बीच में कितनी जगह होगी? जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो लाइंस के बीच में एक स्पेसिफिक जगह होती है. अब उन लाइंस की जगह को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. सो दिस इज डन बाय लाइन स्पेसिंग. So amount of blank space left between the line of text in a paragraph is called line spacing and it is measured in lines or units called point. So in lines में या फिर points में measure किया जाता है. So to increase and decrease the space को बढ़ाना या फिर कम करना है, what we have to do? We have to first select the text. So here we have selected it. Now click on the line and paragraph space option in the paragraph group in the home tab. So home tab के paragraph group में जाना और वहां से हमें paragraph line and paragraph spacing option पे click करना है. This is our line and paragraph spacing option. इस पे click करेंगे so this dialog box will come in front of us. इसमें से हम select कर सकते हैं whatever we have to select. We can then select the desired spacing value and then after clicking it the values will be inserted in our
text. पैराग्राफ स्पेसिंग, अब लाइन स्पेसिंग तो हमें पता चल गया, लाइंस के बीच में स्पेस हो जाएगा पैराग्राफ स्पेसिंग की वजह से, पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है। So the amount of blank space between above or below the paragraph is called paragraph spacing. To set the paragraph spacing, first we have to select the text को select करना है. Next we have to go to the layout tab and specify the required value in the before and after spin boxes in the paragraph group. So जैसे हमारे पास बॉक्स खुलेगा, इसमें हमें लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, आफ्टर कितना चाहिए, अबव कितना चाहिए, बिलो कितना चाहिए, वो हम इसमें डाल देंगे. उसके बाद we can insert the space between the paragraph. Indenting text. The amount of spacing between the text and the page margins is called indentation. So वो स्पेस जो टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच में होता है, ये हमारा पेज का मार्जिन है और ये हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना मार्जिन है उसको कहते हैं इंडेंटिंग टेक्स्ट. Various types of indentations are as follows. Left indentation and right indentation. It is used to specify the amount of space in the left margin. Left के साइड से कितना स्पेस है, ये जो स्पेस है this is called left indentation, और right के साइड से कितना स्पेस है, it is called right indentation. Okay, right indentation is divided into two parts, first line and hanging. First line, it makes the first line of the paragraph indented more towards the right. जो टेक्स्ट का जो फर्स्ट लाइन है उससे जो ज्यादातर वो राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट लाइन. बाकी लाइनों के अलावा फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा राइट की तरफ इंडेंट कर देता है. हैंगिंग, इट मेक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ इंडेंटेड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट लाइन. सो हैंगिंग की वजह से जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ का वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा चला जाता है और बाकी लाइनों की कंपैरिजन में. So to set the indentation for the text, follow these steps. अब यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट इक्वली डिवाइडेड था, बट हमने राइट इंडेंटेशन किया है तो हमारा टेक्स्ट जो है राइट की तरफ चला गया. So select the text, then click on the layout tab and specify the required value in the left and right spin box. So red and indenting बॉक्स में हमें क्लिक करना है और उसमें हमें लेफ्ट एंड राइट इंडेंटेशन स्पेस डालना है, जो भी ऑप्शन चाहिए हमें वो डाल सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक आउटसाइड द बॉक्स एंड व्हाट विल हैपन, द indentation will be applied in our text. You can also decrease or increase the indentation using decrease indent and increase indent option respectively. So increase or decrease की मदद से भी हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं. In the paragraph group of the home tab. So यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा. Now paragraph formatting using the paragraph dialog box. So paragraph dialog box में जाके अब हमें paragraph formatting करनी है. Let's see how can we do that. You can apply the paragraph formatting using the paragraph dialog box. To open the paragraph dialog box, do one of the following. इनमें से एक चीजें करनी है. Click on the paragraph dialog box. Paragraph dialog box पे click करो. Launch in the paragraph group on the home tab. Home tab के paragraph group में हमें इस option पे click करना है. So this will come in front of us. Paragraph dialog box is in front of us. अब इसमें से हमें क्या करना है? Click on the paragraph dialog box launcher. So paragraph dialog box launcher पे click करना है. Paragraph group in the layout tab. So इन दोनों में से कोई भी एक method हम follow कर सकते हैं and this will open in front of us. From here we can select the alignment. Here we can select the indentation. Select line and paragraph spacing. Line या फिर paragraph spacing जो भी हमें चाहिए, we can select it from here and then click on OK button. So after clicking it, the paragraph formatting will be done. So there are two methods, by going the paragraph group and by in the home tab and paragraph group in the layout tab. Next is bullets and numbering. Bullets and numbering क्या है? It is an important feature in Word 2019. So Word 2019 में एक important feature है
It is useful when you want to present your text as a list of items. So ये तब यूज करते हैं जब हम अपने टेक्स्ट को लिस्ट ऑफ आइटम्स के रूप में डालना चाहते हैं. Lists make it easy to find information that we are looking for. So there are two types of lists. They are bullets and numbering. So जब भी हमें कोई भी चीज हम बना रहे हैं बोर्ड में और उसमें हमें उसकी एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए we use this bullet and numbers. Let's learn about them. Bullet list is usually used when the order of item in the list does not matter order. By default, Word uses simple black dot as a bullet. So bullet हम कब यूज करते हैं? तब यूज करते हैं कि जो भी हमने लिस्ट बनाई उसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही हमें लिखना है. So तब हम बुलेट यूज करते हैं और एक ब्लैक डॉट जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा डॉट ये बाय डिफॉल्ट वी कैन यूज दिस बुलेट. जब भी हम बुलेट पे क्लिक करेंगे ये बुलेट बन के आएगा. वी कैन चेंज द बुलेट ऑफ आवर चॉइस आल्सो. द नंबर्ड लिस्ट इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इंपॉर्टेंट. एग्जांपल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और स्टेप्स. सो जब हम स्टेप्स की बात करते हैं या किसी सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम नंबर्ड लिस्ट को यूज करते हैं. इसकी वजह से वी कैन पुट डाउन द नंबर्स एंड हमें पता रहेगा फर्स्ट नंबर पे ये है, देन सेकंड पे नेक्स्ट है, फिर थर्ड पे नेक्स्ट. सो नंबर्ड लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी सीक्वेंस के बारे में बात करनी होती है. क्रिएटिंग द बुलेटेड लिस्ट एंड क्रिएटिंग द नंबर्ड लिस्ट बोथ are to be done in the same way. For doing both we have to first select the text. text को select करेंगे, home tab में जाएंगे, पैराग्राफ में ग्रुप में जाएंगे. अगर bullets डालने हैं तो we can click on bullet और numbers डालने हैं तो we have to click on numbers and then select the desired bullet or the number that we want. तो इसके भी sequence दिए गए हैं. bullet भी कई types के हैं और numbers भी बहुत सारे types के. we can select from that and then we can insert in our text. So here the bullets are inserted and the numbers are inserted in the same text. एक ही text में दोनों चीज हमने insert करके दिखाई. Applying borders, you can add borders around the text, a paragraph or a page. So किसी भी हम border apply कर सकते हैं किसी भी paragraph या किसी page पे. To add border around the text or a paragraph or a page, किसी पेज या टेक्स्ट या पैराग्राफ में अगर हमें बॉर्डर डालना है so we have to first select the text. टेक्स्ट को पहले हमें select करना है, then click on the border option in the paragraph group in the home tab. So home tab के paragraph group में जाके border option पे जाना है और फिर वहां से border and shading option पे click करना है. Then select the options under settings section. So जैसे हमने border and shading पे click किया, this box is in front of us. यहाँ से हम border को apply कर सकते हैं. Select the appropriate option, जो भी option चाहिए इनमें से हम उसको click कर सकते हैं तो select कर सकते हैं. Select the border style under style list box. So style list box में जाके हमें जो है जो भी बॉर्डर का स्टाइल चाहिए वो चेंज कर सकते हैं. बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं कलर वाले ऑप्शन में जाके एंड सेलेक्ट द बॉर्डर थिकनेस विद विड्थ लिस्ट ऑप्शन. सो विड्थ लिस्ट में जाके हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को कितनी मोटाई चाहिए वो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं. बाय क्लिकिंग ऑन दीज, बाय चूजिंग द ऑप्शंस फ्रॉम हियर. आफ्टर क्लिकिंग वी हैव टू सेलेक्ट क्लिक ऑन दिस ओके बटन. ओके बटन पे क्लिक करना है एंड द option will be applied. To add a border around the page, click on the page border tab. अब किसी पेज पे अप्लाई करने के लिए पेज border tab पे जाना है. Select the appropriate option on the settings section. Select the border style. Enter the style list box. Color in the color list box and width in the width list box. And then click on the OK button. You can convert the bullet list into numbered list by clicking on the numbering option और numbered list को bullet list में डाल सकते हैं by clicking on this bullet option in the paragraph group on the home tab. Now quickly let's come to the workout session, children. Write down the shortcut keys for the following option. So यहाँ पे कुछ options दिए गए हैं, इनके shortcut keys हमें लिखने हैं. So for writing in bold we write Control
plus B. For italics we use control plus I. For increasing the font we use this is control and then plus button. For decreasing font we press this control and minus button. For aligning the text left we use control plus L. For center we use control plus E. For right we use control plus R. For justify we use control plus J. So these are the answers to the given workout, children. You have to learn all these shortcut keys that we have done. Now let's come to the recall time. The process of displaying the selected text in a certain manner is called character formatting. Increase font and decrease font size options are used to make the text bigger or smaller respectively. Strike through is a font effect that crosses something out by drawing a line through it. Beach में से. Superscript refers to the text that is positioned slightly higher than the line of text, and the manner in which text is placed between the margin and the page is called page alignment. The amount of blank space left between the lines of text in the paragraph is called line spacing. It is measured in lines or units or called points. The amount of spacing between the text and the page margin is called indentation. So जो भी हम spacing डालते हैं, that is called indentation. Now let's quickly come to the book exercise, children. Take the correct options. The shortcut key to increase font size option is, so for increasing we have to press this control plus shift plus greater than symbol. Next is the strike through option is present in the dash group. Yes, it is present in the font group. On the home tab, which of the following option is not available on the home tab? So thesaurus is not used in the home tab. Which of the following options change the case of every letter? For changing the case of every letter, we use this toggle case. Which option positions the text slightly higher than the text on the base line? So which option we are going to use for the text slightly higher? ऊपर करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? We use the superscript option. Now let's quickly come to the fill in the blanks, children. Dash helps to make change of the default setting. So default setting को change करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं? In the file tab. Dash is the font effect that crosses something out by drawing a line through it. So it is strike through. So it is strike through option. By default, the text is always aligned to the dash margin. So the text is always aligned to the left margin. Line spacing is measured in lines or units called points. Now next, come to true and false. Subscript refers to the text that is positioned slightly lower than the line of the text. Yes, this is true. Next, you can add effects like shadow, glow, reflection, etc. using the text effect option. Yes, this is also true, children. Next, third one is, if you want to remove highlighting, then click on the clear all
formatting option. No, false for removing highlighting. This is used for removing every type of formatting in a text. So this is false. And the amount of black space above or below paragraph is called indentation. This is also false. That is called paragraph space. So children, these were the fill in the blanks. Now let's quickly come to the question and answers. So what do we mean by formatting? Formatting means the aligning of the text, or the formatting means the changing of the text in a presentable manner, that so that it gets the attraction of people towards the text that we have written. It is the arrangement and alignment of text in a proper manner. That is called formatting. Next is name all the options available in the change case tool. So the options in the change case tool are sentence case, then uppercase, lowercase, toggle case. So and one more is there. You all know there are 5 cases, and we have named 4. One is your homework. You have to find it out. What is that? What is the use of superscript and subscript option? So superscript option is used for writing the text one step up to the given margin line. Means margin line जो भी हमारी line है उससे हमारा text one step थोड़ा सा ऊपर लिखा होता है. In the subscript option, the text changes position to one step down. So जब हमारा subscript use करते हैं तो हमारा जो text है वो one step थोड़ा सा down चला जाता है. The example for superscript is 4th. For in this we write 4, then th comes to the top, and in the subscript we write h2o. So 2 will come a little bit down to h. Next, what do you mean by alignment? Name all the alignment options. So alignment is arrangement of text in a particular way. That is called alignment, and there are 4 types of paragraph or text alignment. So they are, first one is left alignment, in which the text is aligned to the left. Next is right alignment, in which the text is aligned to the right. Next is the center. In this, the text is aligned in the center. And the last one is justified, in which the text spreads evenly to the left, right, and the center. So these are the 4 types of alignment of text. So children, this was all for today in this class. I'll be waiting for you in the next class. Till then, stay late.